सो आज का टॉपिक थोड़ा छोटा ही टॉपिक है, बट देन इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, समथिंग कॉल्ड एज व्यू स्टेट। आइए देखते हैं क्या होता है एक व्यू स्टेट। ठीक है, सो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू थिंग्स फ्रॉम दिस डायग्राम। ओके, सी, लेट्स अंडरस्टैंड in this way, like we have a certain kind of user interface. ठीक है, let's take this as an assumption that we have a certain kind of interface, user interface, where we have been told to, like, fill some of the details onto page number 1, and you probably have seen any such kind of interfaces. For example, if you go to make the registration of your passport, that time also similar kind of interfaces there. I have seen that, or maybe with some other websites. You might be have seen this kind of interface. So what I'm talking about, like, there is a page one. As soon as you log in, you go to some page. You go to home page, and then you have been asked to fill some of the details on, let's assume page number 1. And after filling some details like your personal details, for example, your name, and your age, your gender, your mobile number, your address, something like that. you know so you have been told to fill some details onto this particular form, and then you press the next button. Because this was form number 1, there is nothing called as back. This is form number 1, so obviously there is no such button to take you back of this page. What is back? This is page number 1. This is obviously page number 1. Nothing is back to this page number 1, right? So there's only one button, next. And what happened when you click the next button? You have been you certainly new page get loaded. A new page get loaded, and in this form, let's assume that we need to fill, what we need to fill. We need to fill our contact details. For example, our address, and it could be like primary address, could be like secondary address, it could be like your phone number or something else. That after clicking and after filling every those details over here onto this form, we click the next button. Again, we click the next button. So this was my form number 1, this is form number 2, and then after clicking next, we have been routed to form number 3. Now here something like, we required to enter some of the education details, like what was our latest degree and everything. That's all the things what we require to fill on to this form. And then we click the next button. We have been we have been taken to form number 4. There we probably require to fill our experience details, something like that. So probably, I don't know, but probably you might have seen a similar kind of interface. अगर आप passport के लिए online apply करते हो तो you can see that. Now, what I was explaining you, the scenario was like, if we are filling some details on form number 1, on, or rather web page number 1, and then we are, after clicking some, we are making, we are going to form number 2. There also we are filling some details, and then we are going to form number 3, form number 4, and on to every form we are filling some detail. Finally we got this button submit, and as soon as we submit this, so the data of form number 1 along with form number 2 along with form number 3 and along with form number 4, then everything, yani 1 plus 2 plus 3 plus 4, this whole data requires to be get submitted. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ फॉर्म नंबर 4 जो रिसेंट था सिर्फ उसका ही डेटा सबमिट होना चाहिए. नो, व्हाट वी रिक्वायर कि व्हेन आई प्रेस द सबमिट बटन, तो फॉर्म नंबर 1 प्लस जो कुछ भी हमने फिल किया फॉर्म नंबर 2 पे, एंड देन प्लस जो कुछ भी हमने फिल किया फॉर्म नंबर 3 पे अलॉन्ग विद फॉर्म नंबर 4. As soon as now I press this submit button, so this whole should 1, and then plus 2, and then plus 3, and whatever the field data you have been submitted on form number 4, that whole record should be get submitted. तो जब हमें सारे फॉर्म्स के we wanted कि whatever the records, whatever the fields record we have, whatever the values for the fields what we have filled over here, as along with the values what we have filled over here and everything. तो अगर हमें इस तरह से whenever we wanted to capture the details of every page, then certainly we require some amount of memory for that. So that memory refers to something called as view state. That memory refers to something called as view state. अच्छा, this is not just about forwarding, going from one form to another form. ठीक है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि you filled some of the details on form number 1, and then you go to form number 2. Form number 2 पे आने के बाद में आपको थोड़ा सा confusion हो रहा है. You are probably getting this in mind कि there are few of the details that probably I have messed up, or maybe I have
I have written, I have make some typing mistakes of. So you wanted to go back to this. तो यहाँ पर एक back का button है. Now as soon as you go back to this particular form, when you were on to form number 2 and now you press this back button, so you should be like you should be routed to form number 1. But then form number 1 should not be blank. What we wanted to see कि whatever the details that we have filled onto this form, यहाँ अगर if it contains 10 fields, let's take an assumption कि यहाँ पे 10 fields हैं, है ना? If it contains the 10 fields over here, then what we wanted when I come back, if I press this back button from form number 2, I should be come to form number 1. But then form number 1 should not be actually, the field should be not rendered, the field should not be refreshed. Rather, what I want, कि whatever the details I have filled onto the particular field, that should appear over here. तो इसका मतलब क्या होता है कि as soon as you fill some details onto a form and then you press this next button, these whole things is getting stored into one of the memory called as view state. So either you go further or you come back to this, that everything should be get loaded. When you come back to this, see, when you come back to this whole data of every field is going to be get loaded from a memory called as view state. Now this happens with page number 1. This also happens with page number 2 fields. I mean details, whatever you enter over here goes to view state. If you wanted to come back, that they are going to be loaded from view state. So this happens with every page. So if you have probably seen any such kind of interface in your life, where you will be filling some of the details and it was taking you from form number 1, from page number 1 to page number 2, probably from page number 2 then page number 3, and at the last you will be getting, at the last you will be getting the submit button. Acha, this happens with government website also. I have seen this with the Indian government, Indian passport.gov.in. I recently actually applied for the passports of my children and my wife. That time I have seen this. Moreover, with the Aadhaar card website also, you go to that. So they have separate section, and every section is actually one particular form. And you do something onto page number 1, then you click the next button, you have been routed to page number 2, and like this. So it goes systematically from one page to another page. So what here we should require is like, whenever one form, the data of one form is generated and we are routed to second form, then that particular data must be stored somewhere. So inside the Salesforce, whenever we are designing any such kind of visual force page, but this is one of the VF, this is one VF page number 1, and then this is, for example, VF page number 2, and then this is VF page number, for example, 3, and then VF page number 4. For example, if you are designing a kind of interface, what is that name of memory where all these form data will be going to get stored? So that memory is your view state. That memory is something called as your view state. Okay. So what we are learning, guys, is a theoretical concept, but then this one is an important thing. You cannot simply say कि यार ये तो theory है मैं इसको skip कर देता हूँ. नहीं. This is something they usually ask this in the interview. वैसे भी visual force के ऊपर पूछने के लिए बहुत ज़्यादा questions नहीं है. But then if they started asking in the if they are started asking about this, then view state is a confirm question you are going to get it. So what is a view state? First of all, and then what does it means by the view state exception? When this exception is going to be get generated, and how to tackle that exception? What are few of the view state best practices? That is all what we are going to learn. So although this is a theoretical concept, no, don't have doubt about this, but then you need to learn this. Okay. So what is a view state? I hope this is a clear with everyone. View state is a kind of memory. What kind of memory? A form-based memory. So whatever you fill up over in this form is going to be get stored inside one memory called as view state. So view state is a temporary memory that is available with every form. So your form, if it have 10 fields, then whatever the user will enter over name and then phone number and then whatever, or for that 10 fields, whatever user will enter, that everything is going to be get captured and they are going to stored inside a memory called as view state. ठीक है? So that is what. जो हम लोग कैश मेमोरी बोलते हैं ना, जो ये what we usually do with, for example, I go to login.salesforce.com. यहाँ पे कैसा है कि this everything has been inside my cache memory. तो ये कैश से रिफ्लेक्ट हो जाता है यहाँ पे. यू गो टू आपने देखा होगा कि व्हेन आई यूज टू गो लाइक अकाउंट, एन अकाउंट में अगर मैं प्रोबेबली इफ आई गो एंड आई क्लिक ऑन दिस समथिंग न्यू, तो कुछ चीजें वो ऑटोमेटिकली कैप्चर करता है, ऑटो फिल करता है. व्हाई ऑटो फिल करता है? ये ऑटो फिल करता है बिकॉज in the past for the account name I have entered, for this field I have entered like this, something like that. So that is some of the reason, that is some of the reasons कि ये कैश में स्टोर होता है guys. But for visual force page, this is not a cache memory, it's a view state memory.
ये होता है हमारा व्यू स्टेट। ठीक है, अब चलो इसके ये था फर्स्ट पॉइंट कि व्हाट एग्जैक्टली इज द व्यू स्टेट एंड व्हाट इज द पर्पस। I'll be sharing this diagram also onto your drive। ठीक है, तो you can also explain कि when we are if there is a kind of interface where we are asking for few of the details onto page number one, then after page number when the I mean after entering the details, let's assume that 10 there are 10 fields over here, and after in the data of all those 10 fields, if the person clicks the next button, then he is routed to next. Here also we are entering some details, so what the details, whatever the record, whatever the fields data what have been entered by user onto this particular form, they are going to be stored into one of the memory called as view state. So even if you come back to this page once again, if you wanted to have a look and you wanted to come back, then also this data is going to be loaded from view state method. That is what a view state. Chali. Now, if I wanted to locate over here, see we also have designed few of the visual force page over here. Let me try to go with any of the visual force page that have a controller with this. So I'm going to the setup memory, going to develop, I'm going to lightning, and then visual force page. Let me try to see any of the page which have a controller. Search, show all. Let me try to see whether it's have a controller. Yeah, it do have a controller. Fine. So what I'll be doing is like copy this. So here, if you can see that when we go to the development mode, we have two tabs over here. My first tab, my first tab is what? My first tab is about like visual force page. Here we are designing the visual force page. The second tab I can see over here is the controller tab. The class, the supporting class for that, for this front end part, for this visual force page, whatever the supporting class I have created, that's my controller section. It's Apex class. Now here you can add a third tab over here. You can add a third tab over here with the name called as view state. So with the view state, with the view state, what you can see, okay, how much size your this particular form is taking. So if this particular page is being getting loaded, so how much memory it's actually consuming, that we can see from that view state tab. And why it is important to know, because there's a fixed size for that. There is a fixed size for that. So let's go with a little bit of the theory so that people understand it more. So view state kya hai? First of all, view state also is an object. If I'm telling you it's a memory, yes, of course it's a memory. But then everything, whatever is stored inside the Salesforce, whatever, if it is an account is an object. Account could also be a memory, but account is an object. If it's a contact candidate, that's a memory because we are storing something. But internally, that is an object, right? Now, in the same way, view state is what? It's a kind of temporary memory. But in case of Salesforce, what we used to call it, it's an object. View state is a standard object, and which is used to hold the visual force form data. Visual, not just any form. Typically, visual force form data between post and back implementation. What does post and back? Post means going forward. On back means of course coming back to this page. So if you even go further or you come back to this page, you are going to get these all details from view state object, and that's a memory. So view state is what? View state is an object, a kind of memory, a temporary memory, which is used to hold the visual force form data between post back implementation. Okay? And whatever is stored inside this object, because see, obviously, if you can hear somebody's asked me onto this, okay, sir, you are saying that visual force यहाँ पर जो भी details आप store कर रहे हैं, I mean whatever the user is entering over here, that are going to be get stored inside this memory. तो अगर मान के चलो सर कि यहाँ पे यूजर अपना क्रेडिट कार्ड का डेटा, ठीक है, और अपना डेबिट कार्ड का डेटा, अपने अकाउंट का, सेविंग अकाउंट का डेटा, बैंक डिटेल्स, ये सब डाल रहा है, तो क्या व्यू स्टेट में जा रहा है, तो ये मतलब अगर ये हम शो कर लेंगे तो ये तो क्लियर कट सबको दिख जाएगा। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होता है। एक्चुअली वॉट एवर इज स्टोर्ड इनसाइड द व्यू स्टेट, it's automatically been encoded. There is something called as base 64 on encoding. So whatever is stored inside this object is automatically encoded. And when you ask is तब वो decode होता है, लेकिन whatever is stored inside the view state, it is always ये hidden fields के form में होता है, and that is encoded with one of the format called as base 64 encoding form. ठीक है, तो व्यू स्टेट में मेजरली देयर आर टू थिंग्स.
आपके फॉर्म का डेटा एंड आपके कंट्रोलर क्लास का डेटा। बिकॉज वेन एवर वी कंस्ट्रक्ट वी हैव दीज टू कंपोनेंट, एक होता है हमारा फॉर्म विजुअल फोर्स और दूसरा होता है हमारा कंट्रोलर। ठीक है, दो ही कंपोनेंट्स होते हैं वैसे भी विजुअल फोर्स में। जब वेन एवर वी, इफ यू रिमेम्बर अपने इनिशियल डे जब अपन इसको स्टार्ट करे थे, मैंने कहा था देखिए विजुअल फोर्स में दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है मार्कअप, विजुअल फोर्स मार्कअप, और दूसरा कंट्रोलर। मार्कअप इज व्हाट? मार्कअप इज योर पेज एंड द सेकंड कंपोनेंट इज द कंट्रोलर। तो जो आपका व्यू स्टेट होता है ना, व्यू स्टेट यूजेस टू स्टोर, व्यू स्टेट इज यूज टू स्टोर दीज टू थिंग्स। व्यू स्टेट जो होता है वो दोनों दोनों चीजों को स्टोर करता है, आपका मार्कअप का डेटा मतलब आपके पेज का डेटा, फॉर्म का डेटा, और दूसरा कंट्रोलर का। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ दिस इज 135 KB, नॉट मोर देन। ठीक है, तो वट एवर यू आर स्टोरिंग इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट, आपका जो ये डेटा है, आपका जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म का मैक्सिमम कैपेसिटी है 135 KB, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, जो भी फॉर्म पे जो भी डेटा स्टोर हो रहा है, इट शुड नॉट एक्सीडेड दैट 135 KB। नाउ दिस इज समथिंग दे आस्क इन द इंटरव्यू एज वेल एज इन द एडमिट 201 एडमिट सर्टिफिकेशन जो होता है ना, उसमें भी पूछते हैं ये। तो व्यू स्टेट का मतलब एक ऑब्जेक्ट है और फिर इसमें डेटा स्टोर हो रहा है, तो उसकी अपनी कैपेसिटी है, इट शुड नॉट एक्सीडेड 135 KB। तो अब हम ये जानते हैं कि अगर क्या हो जाए कि वो एक्सेप्शन, अगर वो डेटा फॉर्म का डेटा इफ इट एक्सीडेड दिस कैपेसिटी, तब जाके एक एरर जनरेट होता है जिसका नाम है व्यू स्टेट एक्सेप्शन। व्यू स्टेट एक्सेप्शन। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द रीजन ऑफ गेटिंग दिस एक्सेप्शन, व्यू स्टेट एक्सेप्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने जो कहानी की शुरुआत है वो यहां से करना पड़ेगा कि व्यू स्टेट एक्चुअली होता क्या है। और जब आप उसको वो सारी चीजें समझा दोगे कि देखिए व्यू स्टेट एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप एक मेमोरी भी कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज जब भी आप किसी फॉर्म पे इफ यू हैव अ काइंड ऑफ इंटरफेस जहां कुछ डिटेल्स फॉर्म नंबर 1 पे और उसके बाद पेज नंबर 2 या फॉर्म नंबर 2 और फिर फॉर्म नंबर 3 पे मांगी जा रही है, सो वट एवर द यूजर हैज एंटर्ड ऑन टू एवरी फॉर्म दैट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज व्यू स्टेट। तो आप ये जान लो कि जब चीजें स्टोर हो रही है तो देन देयर इज अ कैपेसिटी, ऐसा नहीं कि ये इनॉर्मस है और आप जितना चाहे अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे, ना ना, देयर इज अ फिक्स कैपेसिटी ऑफ दैट and that is 135 KB for every form. For every form, it's 135 KB. So whenever that form, if the form data, मान के चले कि form number 1 was good, form number 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं गई, 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं गई, ठीक है, so ये that इसका जो डेटा था that was below 135 KB दोनों का, बट देन यहाँ फॉर्म नंबर 3 is exceeding 135 KB, तो यहाँ पे इस मोमेंट पे जनरेट होगा as soon as you click this next button, one error comes over here with the name view state exception, with the name view state exception. So first of all, what is the cause? What is the cause? कि whenever the size of view state is exceeded beyond, exceeded beyond to 135 KB. If your form, ठीक है, that means in general word, if your visual force page form is containing data whose sizes whose sizes more more than 135 KB, then your view state exception is generated. ठीक है, तो व्यू स्टेट एक्सेप्शन कब जनरेट होता है कि जब कोई ऐसा पेज है हमारे पास में जिसका डेटा जब कंपाइल हुआ, ठीक है, क्योंकि देखो आप जो भी फॉर्म में जो भी आप स्टोर करते हो दैट इज बीइंग कंपाइल्ड बाय अ विजुअल फोर्स पेज कंपाइलर नाम का कंपाइलर होता है, एंड आफ्टर कंपाइलिंग अगर साइज इसका इट्स गोइंग ग्रेटर देन 135 KB, तो हमको जैसे ही ये नेक्स्ट बटन हम प्रेस करेंगे ना तो हमको व्यू स्टेट एक्सेप्शन ये नाम से हमको एक एरर मिलता है। ठीक है, तो अब उसे कैसे हैंडल करना वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, उसके लिए आइए हमें मेन फोकस करना पड़ता है अपने कलेक्शंस के ऊपर, आओ देखते हैं। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर वो टैब लेके आना पड़ेगा ताकि मुझे क्लियर कट पता चले कि कौन सा वो कंपोनेंट है जिससे साइज एक्सीड हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दैट दैट हैज आल्सो बीन रिटन। ठीक है, ये उसकी सेटिंग लिखी हुई है कैसे लेके आना। चलो, तो यहाँ पर मैं एक टैब लेके आ रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू माई सेटिंग्स, है ना, आई एम वन सेकेंड गोइंग टू माई सेटिंग्स, जहाँ से मैंने डेवलपमेंट मोड ऑन किया था बस वहीं से। ठीक है, एक्सपैंड द पर्सनल, उसके बाद एडवांस यूजर डिटेल्स पे जाओ, एडिट करो, और देखिए यहाँ पर आपने यहाँ पर ही था आपका डेवलपमेंट मोड।
ये देखा आपने इसको ऑन किया। ठीक इसी के नीचे देखिए आप, यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, ठीक इसी के नीचे देयर इज अ चेक बॉक्स ओवर, शो द व्यू स्टेट, ठीक है, शो द व्यू स्टेट इन डेवलपमेंट, तो ये अनचेक्ड है, अभी इसको मैं चेक कर देता हूँ। इसको आपने चेक करना है सभी लोगों, और उसके बाद आप इसे सेव करिए। और नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम ओवर हियर एंड यू रिफ्रेश द विंडो, सी वन न्यू टैब हैज बीन एडेड, ठीक है, वन न्यू टैब हैज बीन एडेड विद द नेम व्यू स्टेट, ठीक है। तो ये जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं ना, जब नंबर ऑफ द फॉर्म्स ज्यादा रहता है, देयर वी एक्चुअली ऐड दिस टैब, व्हेन देयर आर ओनली वन पेज टू पेज तो उतना कोई ध्यान नहीं देता इसके ऊपर में। बट देन इफ योर यूजर इंटरफेस अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, या फिर लेन ऐसा लीनियंटली ग्रो कर रहा है, एक के बाद एक फॉर्म है, एंड देयर इफ समवेयर इन आपके बैक ऑफ द माइंड में ऐसा दिमाग में चल रहा है कहीं व्यू स्टेट हिट तो नहीं कर देगा, मतलब जब कभी भी आप रियल टाइम पे इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, व्हेन यू आर सीइंग कि हाँ अपन कुछ डिटेल्स व्हाट वी आर फिलिंग इनटू फॉर्म नंबर 1, कुछ के लिए मैं फॉर्म नंबर 2 पे जा रहा हूँ, तो आप ना व्यू स्टेट इनेबल करके रख लिया करो। अब नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू कम टू दिस, ठीक है, तो ये है आपका शो ऑल अकाउंट्स रिकॉर्ड पेज, ये वाला पेज, इसके बारे में ये बता रहा है, इसको आप एक्सपैंड करो, इसकी स्टेट क्या है, इसके अंदर कौन कौन से कंट्रोलर्स है, तो ये कंट्रोलर है मेरा इसके अंदर में। नाउ हियर आई कैन सी ओवर हियर टोटल साइज, अगर मैं देखूं टोटल साइज है इस पेज का 9.43 KB, और मेरी कैपेसिटी कितना है 135 के, बहुत है वैसे तो 135 के भी बहुत ज्यादा है ना उस हिसाब से। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो साइज, वो 9.43 है, मतलब ऑलमोस्ट 1% भी नहीं हुआ है अभी देखा जाए तो, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 9.43 जो है वो कंबाइन है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आ रहे हैं उसका यहाँ पे। तो कंट्रोलर का साइज आप देखो तो 2.78, ठीक है, कंट्रोल के जाओ तो आपका एक लिस्ट कलेक्शन है, यहाँ पे एक कलेक्शन है, ये वाला एक कलेक्शन है, देखो उसका नाम भी बता रहा है पब्लिक लिस्ट, ये वाला LST अकाउंट, तो LST अकाउंट, ये कलेक्शन का ही साइज जो है दैट इज 2.57 के, कलेक्शन का जो साइज है उसमें 36 रिकॉर्ड्स हैं, पूरा बता रहा है, 0 से लेके 19 जो रिकॉर्ड्स हैं उनका साइज अगर देखना है तो आप यहाँ चले जाओ, ठीक है, ये पूरे रिकॉर्ड्स आ गए, उनके सब डिटेल आ गया। फिर 20 से लेके 35 तक जाना है तो यहाँ चले जाओ, अगर इसको ऐसा आप मिनिमाइज करते हो तो ये पूरा बता रहा है आपको कि कलेक्शन का साइज वगैरह कितना है ऐसा। और ये पूरा बताता है कि कंट्रोलर कितना कंज्यूम कर रहा है, पेज कितना कंज्यूम कर रहा है ना, ईच एंड एवरीथिंग इज ओवर हियर, सब कुछ बताता है यहाँ। अब थोड़ी देर के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि दैट आर साइज इज गोइंग बियॉन्ड 135, ऐसा थोड़ी देर के लिए हम मान के चलो कि हमारा जो किसी वजह से हमारा व्यू स्टेट एक्सेप्शन हिट हो गया है, और व्यू स्टेट एक्सेप्शन हिट हो गया है, तो मैं इस टैब पर आया हूँ और मैं यहाँ पर अब एनालाइज कर रहा हूँ, मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि विजुअल फोर्स का वो कौन सा कंपोनेंट है जिसकी वजह से मेरा जो व्यू स्टेट एक्सेप्शन है वो हिट हो गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मोस्टली इसमें जो होता है ना वो आपका जो ये रहता है, मोस्टली कलेक्शंस आप डिफाइन करते हो उसकी वजह से, क्योंकि कलेक्शन में डेटा स्टोर होता है, तो कलेक्शन की वजह से आपका व्यू स्टेट एक्सेप्शन जो, अब देखो यहाँ से 36 रिकॉर्ड्स वगैरह कुछ थे, तो इट वाज अ सिंपल थिंग, मैंने ऑल अकाउंट पे बुलवाया था यहाँ पे 36, ऐसे यहाँ दिख ही रहा है, मेरा 36 रिकॉर्ड, मेरा 36 रिकॉर्ड। बट अगर मान के चलो कि यू आर आस्किंग द सेम पेज रियल टाइम पे, जहाँ पे 36 मिलियंस रिकॉर्ड है, तो ऑब्वियसली ये जो कलेक्शन है इसका साइज बहुत बड़ा रहेगा, उसकी वजह से प्रोबेबली आपका व्यू स्टेट जो है वो हिट कर सकता है। तो ऐसी सूरत में क्या करना, तो ऐसी सूरत में कैसे हैंडल करना, तो अभी यहाँ पर एक चीज आप सभी लोग नोट करो, मैं एक चेंज करने वाला हूँ, उसके पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसको कैसे हैंडल करना, तो हमारा ये जो कलेक्शन है इस कलेक्शन का साइज कितना है, ये कलेक्शन का साइज इतना है, ठीक है, ओके, कलेक्शन का साइज इतना है, ठीक है। So, ये कलेक्शन है, एंड लेट्स अज्यूम कि कलेक्शन का साइज जो है बहुत ज्यादा हो गया, इसी की वजह से व्यू स्टेट जो है हमारा एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो भी कलेक्शन आप डिफाइन करें उसको ट्रांजिएंट कीवर्ड के साथ डिफाइन करें। तो ट्रांजिएंट कीवर्ड अगर आप कलेक्शन पे ऐड कर देते हो तो इट विल नॉट गोइंग टू ऑक्यूपाई द स्पेस इनसाइड व्यू स्टेट। अब ये क्या लॉजिक है, तो मैं चलता हूँ कंट्रोलर पे, कंट्रोलर पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मैंने ये कलेक्शन डिफाइन किया LST अकाउंट, एंड हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि व्हाट वी आर अज्यूमिंग कि LST अकाउंट की वजह से ही हमारा व्यू स्टेट एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है। तो हमने क्या करना चाहिए कि इस तरह का जो भी कलेक्शन है जिसकी वजह से हिट हो रहा है आप उसको ट्रांजिएंट डिफाइन कर दो, पब्लिक ट्रांजिएंट LST अकाउंट, लिस्ट ऑफ अकाउंट वॉट एवर, नाउ सेव दिस, ठीक है, नाउ सेव दिस, चलो। तो अब मैंने ये जो हमारा जो कलेक्शन है LST अकाउंट नाम का, इसको मैंने ट्रांजिएंट डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसे जितने भी वेरिएबल्स
ऐसे जितने भी कलेक्शंस को आप ट्रांजिएंट जब डिफाइन कर देते हो, तो उसका साइज इज नॉट गोइंग टू ऑक्यूपाई इनसाइड द व्यू स्टेट, वो व्यू स्टेट में ऑक्यूपाई नहीं करते। अब मैं यहाँ चलता हूँ, फिर से यही चीज करता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कंट्रोलर्स में सबसे पहली बात, वो कंट्रोलर का नाम ही हट गया यहाँ से। कंट्रोलर्स में वो जो अपना जो एलएसटी अकाउंट था वो यहाँ से जा चुका है। क्यों? क्योंकि अब उसका व्यू स्टेट में काउंटिंग नहीं होगा। नाउ यू कैन सी कि अब उसका नाम हट चुका है। देखो, पहले का स्ट्रक्चर और अभी के स्ट्रक्चर में आप देखो, तो जो एलएसटी अकाउंट जो पहले हुआ करता था, जिसका साइज कैलकुलेट हो रहा था, अब कंट्रोलर्स में से उसका साइज हट गया। और जो पहले ओवरऑल साइज 9.43 बता रहा था अपने, 9.43, तो 2.57 उसमें से माइनस हो गया, अब 2.57 नहीं रहा, वो हट गया। इसका साइज डिक्रीज होके 7.1 केबी पे आ गया, बिकॉज ये इतना साइज जो है ना इसमें से माइनस हो गया। तो दिस इज हाउ वी हैंडल द प्रॉब्लम ऑफ व्यू स्टेट, दिस इज हाउ वी हैंडल द प्रॉब्लम ऑफ व्यू स्टेट, ठीक है। तो ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था व्यू स्टेट क्या होता है, बट देन दिस इज समथिंग व्हिच इज आस्क्ड इन द इंटरव्यू, इसलिए ये लेना जरूरी है, ठीक है। तो अब कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस पे बात कर लेते हैं, फाइनल टॉपिक। कि सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि नंबर ऑफ द फॉर्म्स हमेशा एक ही रखा करो। एक जब भी हम कोई विजुअल फोर्स पेज बनाते हैं, तो एक ही फॉर्म के अंदर आप चाहे तो कितने भी पेज ब्लॉक सेक्शन या कितने भी पेज ब्लॉक सब सेक्शन वगैरह करो, बट एक ही फॉर्म बनाओ। जितने नंबर ऑफ फॉर्म्स आप इंक्रीज करोगे, उतना नंबर ऑफ व्यू स्टेट मेमोरी आपका बढ़ते जाता है, ठीक है। चलिए, एक तो ये हो गया। दूसरा होता है कि आप एसक्यूएल क्वेरीज को रिफाइन करो, बिकॉज एसक्यूएल क्वेरी की मदद से ही हम लोग जब क्वेरी फायर करते हैं, ठीक है, हम ये क्वेरी फायर कर रहे हैं, और जितनी ज्यादा फील्ड्स का मैं यहाँ पे नाम लिखता जाऊंगा, उतना ज्यादा फील्ड्स का रिकॉर्ड मुझे मिलेगा इस कलेक्शन के अंदर। तो जितनी जरूरत है ना, ये तो एक कॉमन बेस्ट प्रैक्टिस है, देखो ये वैसे भी बड़ी कॉमन बेस्ट प्रैक्टिस है कि जितना रिक्वायर्ड है कभी भी उतना ही डेटा रिट्रीव करके लाओ, ठीक है। और अगर कोई अपेक्स वेरिएबल हो, मार्क एनी अपेक्स वेरिएबल ऑब्लिक कलेक्शन, अगर कोई अपेक्स वेरिएबल है या कोई कलेक्शन है जो आपको लग रहा है कि ये थोड़ा अननेसेसरी है, तो उसको आप ट्रांजिएंट कीवर्ड से मार्क कर सकते हो, ठीक है। और विजार्ड्स मतलब होता है एप्लीकेशंस, ठीक है। क्रिएट द विजार्ड्स या फिर क्रिएट द एप्लीकेशन, जो भी आप एप्लीकेशंस बना रहे हो, ठीक है, विथ एज फ्यू पेजेस एज पॉसिबल, जितना कम पेजेस हो सके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वो जितना मिनिमाइज हो सके उसको आप करो। दीज आर सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हाइल वर्किंग विद द योर व्यू स्टेट प्रॉब्लम एक्सेप्शन, अगर आपको आती है टिपिकली कभी, ठीक है। एंड देन दिस इज द सेटिंग्स, इस तरह से जाना, ठीक है। आज इतना ही करो, बिकॉज इसको एक ही लेक्चर में दोनों कंबाइन नहीं करते अपन। एसओ एस एल क्वेरीज इज अ सेपरेट टॉपिक, इसका आपके पिछले टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, इट्स सेपरेट थिंग। तो मैं एक ही वीडियो में दोनों कवर नहीं करता हूँ इसको, इस वीडियो को मैं लाइक व्यू स्टेट के नाम से दूंगा, एंड बाय टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग एसओ एस एल क्वेरी, प्रॉबेबली कल ही एंड कर दूंगा इसको, ठीक है। चलो, तो अगर मैं कल इसको एंड कर पाता हूँ तो डेवलपमेंट हम एंड कर देंगे, फिर द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंटीग्रेशंस।